Welcome to this week's SARAS meeting, and we are going to study this chart right now. Okay, सबके सामने वो चार्ट है? Yes, sir. Yes. किस किस के सामने चार्ट है? Yes, sir. है. Okay, so what we are seeing here is second Rashi has come in the first house, right? In the Lagna chart, and then we have Mars in the second house in the third Rashi. और मार्स को अगर देखेंगे तो एस्पेक्ट कहाँ कहाँ पे करेगा? फिफ्थ हाउस पे करेगा, एट्थ पे 9, करेगा 8, और नाइन्थ पे करेगा, है ना? मार्स का डिग्री कितना है लेकिन? 8, 14, 14 डिग्रीज. ओके, 14. करेक्ट. तो फिफ्थ, एट्थ और नाइन्थ पे एस्पेक्ट करेगा मार्स. ओके, देन वी हैव यूरेनस इन द थर्ड हाउस. यूरेनस का डिग्री 29 है. So that means it is going to have an effect on the third and the fourth. Interesting. Third and the fourth, and from there it is going to aspect ninth and the 10th also. Then we have Pluto and Rahu in the fourth house, right? So Pluto 13 degrees. Okay. And Rahu is 12 degrees. Okay, so Rahu will be aspecting 8th, Rahu will be aspecting 10th, and Rahu will be aspecting 12th also. Then in the fifth house, we have the sixth Rashi. Sixth house, we have Neptune in the seventh Rashi. Now, Neptune is 17 degrees. So it will be aspecting the 12th house also from there. Seventh house, we do not have anybody, but eighth Rashi is there. Then eighth house, we have ninth Rashi. Ninth house, we have 10th Rashi. And Jupiter and Saturn are there together. So Jupiter is 7 degrees, Saturn is 4 degrees. So they both are in conjunction. And Jupiter and Saturn, they both are having a partial effect on the 8th house also. Right. So Jupiter and Saturn conjunction. Pluto and Rahu also in conjunction. Yes. Pluto and Rahu are also in conjunction in this particular chart. Then in the 10th house, we have Mercury and Ketu. In the 11th Rashi, Mercury degree is 5 degrees. Ketu degree is 12 degrees. So they are also in conjunction. Okay. And in the 11th house, we have 12th Rashi, Sun and Moon. That is also in conjunction. 3 and 8. Sun and Moon together. 3 degrees and 8 degrees. So a lot of conjunctions we are seeing. Pluto, Rahu. That is one conjunction. If you look very closely, Uranus and Pluto also in conjunction. Jupiter Saturn conjunction, Mercury Ketu conjunction, Sun Moon conjunction. In fact, Moon is combust. But there is Right. no conjunction between Pluto and Uranus. It is It's there, Pluto no? and Rahu. Uranus is 29 degrees. Pluto is Yeah, 13 and degrees, no? So the they will be degrees in are conjunction. 14 degrees. Correct. Anything under 15 degrees, we consider it to be conjunction, no? Okay. Right.
And Venus, we have 12th house, first Rashi, 5 degrees. Okay, so it is having an impact on the 11th house also. And ascendant is Taurus, 10 degrees, more than 10 degrees. Okay, so this is the entire chart that we are going to study today. Questions. Okay, simple questions. We'll keep it very, very simple. Okay, this is the chart. We'll keep the questions very, very simple. First of all, education. Okay, of this person. What is the education of this person? And before going into this question, we can go into what do you think are the strengths and weaknesses of this person, right? Okay, which are the areas in which this person is very strong and which are the areas which in which this person can be weak. Okay. So that is the first question. So first question is education. Second question, profession. Profession and achievements. Okay. This is what we can say. Profession and achievements. And the third question is the final question, nature of passing away. Okay, nature of death. And what and unique thing about our SARAS meetings is I will not tell you whose chart is this right now. I'll tell you that at the end. Right, I'm just going to be here to help you decode this chart and guide a conversation. And at the end, we will open all the secrets. All right. Okay. So, I'm not going to send you into any kind of breakout room. I am going to allow you to discuss it here in front of me. I am going to be here only. Okay. So, whoever has found out any clues, let us start from the personality of this person. Let us start from strength and weaknesses of this person. Okay. So, who would love to share? Please get started. Okay. बैठ जाओ खिलाती थी यार कपड़े चेंज नो प्लीज मैं दो दो क्लास कर रहा हूँ और तीसरा Yes, Parul. Yes, sir. Good morning. Good morning. एक्चुअली फर्स्ट स्टेप तो मुझे उनका एजुकेशन दिख रहा है जो सबसे पहले एकदम से आंख में दिख के आ रहा है क्योंकि जुपिटर और सैटर्न 9th हाउस और 5th हाउस दोनों को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम तो मेरे को उनका वही लग रहा है क्या लग रहा है लेकिन एजुकेशन उनका हाँ लेकिन किस चीज में एजुकेशन लग रहा है आपको वो अभी उतना डीप में नहीं गया बट फर्स्ट पॉइंट जो उठ के आंखों में आया वो मुझे उनका एजुकेशन ही आया हाँ क्योंकि वो 5th एंड 9th हाउस दोनों को ही कवर कर रहे हैं जुपिटर एंड सैटर्न दोनों एक साथ में करेक्ट अभी जुपिटर अगर धर्म हाउस में बैठ गए तो सब जगह पे धर्म हाउसेस में इफेक्ट करेगा या एडुकेशन के हाउस में बैठ गए तो सब जगह पे एडुकेशन हाउस में इफेक्ट करेगा जुपिटर राइट सैटर्न विल नॉट इफेक्ट द 5th हाउस सैटर्न का नर्वस डिग्री है अच्छा तो अच्छा डिग्री के हिसाब second से इट aspect, विल करेक्ट करेक्ट हाँ जा रहा है yes. Correct. So Saturn is also partially affecting the 5th Fifth house. yes ये एक पॉइंट Okay. Again, let me come back to the question. इनका नेचर कैसे होगा इनका लाइक्स क्या होगा डिसलाइक्स क्या होगा लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट okay who else would love to share हिमरश्मि जी पुष्पा जी सरोज जी he or she would be more of classy show of kind of thing रहेगा इनका Venus ascendant है हाँ हाँ
थोड़ा बहुत ड्रामेटिकली थोड़ा खुद को संवारना, मतलब ड्रेसिंग पेंटिंग करते रहना, उस टाइप का नेचर ऐसा होगा। हम्म। थोड़ा वेल ड्रेस्ड भी होगा, ज्वेलरी व्वेलरी पहन के थोड़ा बहुत उस टाइप ओके में, उस टाइप का कैरेक्टर, उस टाइप का नेचर रहा होगा इनका। एंड ओके फैमिली में थोड़ा, फैमिली वाइज लाइफ में भी थोड़ा बहुत एग्रेशन भी उनका रहा होगा, डोमिनेंस भी, प्रोमिनेंस एंड डोमिनेंस रहा होगा फैमिली लाइफ में इनका, ओके बिकॉज ऑफ मार्स प्रेजेंस देयर होगा तो वहाँ पे। ओके बट बाय नेचर मोस्ट एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव तो नहीं रहेंगे, परसुआसिव नेचर का रहेगा, क्योंकि सैटर्न का एक्सपेक्ट भी उनका जा रहा है उनपे फैमिली लाइफ में। हम्म सी वुड बी फेशियल, फेस के एस्पेक्ट से उनका काफी सुंदर चेहरा होगा। वीनस 12th हाउस में है तो फेस एस्पेक्ट में ऊपर, आप ऊपर ऐसे थोड़ा सुंदर चेहरा रहेगा उनका। गुड मॉर्निंग। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी भी रहा होगा इनका। वीनस 12th ओके हाउस में है तो फर्स्ट पर्सन अपर है, अपर पर्सन उनका काफी थोड़ा सुंदर सा रहा। आवाज कम कर दी क्या जरा? okay anybody else would love to share? We are talking of the personality of this person. Okay. Yeah, Pushpa ji, go ahead, you can unmute yourself. So he might be a royal kind of person. Sun and moon are coming with Venus, and Venus is the ascendant. And more, he would be a confident and a kingly person. Okay. Moon is getting combust, so emotion wise, he might not be that. His thought process would be like spirituality. Mercury and Ketu are in conjunction. Mm-hmm. So the thought and more of the spiritual or righteous kind of thing. Mm-hmm. And Mars coming in the second house, he must be very skillful with his hands. Anything or skill or something making with his hand Okay. or using his hands for some like that. And yeah, Pluto, some transformation. He would bring some Rahu and Pluto coming, so lot of transformation in creating property or making that kind of thing. Mm-hmm. And Neptune is in the sixth house, and Venus also. Sir, is it possible that So the uh, he sir, would Okay. be. is it Okay, possible that Pushpa ji, okay. sir, is it possible that a gentleman or lady maybe might have used his skillful power of illusion and all to transform his profession completely? मतलब he might have taken initiative and might have done something which might have transformed the professional field completely. Okay. Okay. Let us see. Let us see. But still, I'll come back to the same question again. What do you think? How do you think is the nature of this person? Right? सर What एक could be the पॉइंट strengths? What could be the weaknesses? सर एक पॉइंट मेरे को जो दिख रहा है फर्स्ट हाउस से सिर्फ अगर देखे तो Hmm. उनको सेकंड वो है मून की एसेंडेंट, उनका जो है मून है उनका उसका लॉर्ड। तो बेसिकली तो इमोशनल और थॉट प्रोसेस उनकी रॉयल वगैरह सब रहेगा, अच्छा अच्छा सजना संवरना। बट वहां पे सिर्फ जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है, तो Hmm. इमोशन भी उनके रिलीजियस मतलब रिलीजन से जुड़े हुए ज्यादा हो सकते हैं, या फिर जो भी वो होगा वो राइटियस वे में करने की कोशिश करी होगी ऑलवेज उन्होंने। तो Second राशि का लॉर्ड इज वीनस है, हाँ सॉरी 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 मैं मून थोड़ा नहीं। हाँ Venus में। करेक्ट, लेकिन आप बोल रहे हो सही है, जुपिटर का भी एस्पेक्ट आ रहा है फर्स्ट हाउस में। तो, हाँ तो His फर्स्ट हाउस में expenses. कौन सी एनर्जीज आ रही है फर्स्ट हाउस में? एक तो वीनस की एनर्जी है, और राइट? एक जुपिटर की है और जुपिटर की कोई आ रही नहीं है, है। ठीक है। और एनीबॉडीज एस्पेक्ट इज कमिंग। नहीं जितना मैंने No, देखा sir. उतना तो नहीं है।
सिर्फ No जुपिटर aspects. का नो एस्पेक्ट्स, नो Only Jupiter. इतना ही है खाली, राइट? ओके, सो वी हैव वीनस एंड जुपिटर यहाँ पे कॉम्बिनेशन इन द फर्स्ट हाउस, राइट? Hmm. ओके ओके, कूल, ठीक है। एनीबडी एल्स वांट्स टू कमेंट कि इनका नेचर कैसे होगा, स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं, वीकनेस क्या हो सकते हैं? For helpful nature, he will be a good advisor. So many of the people, they will be taking advices from him. ओके, करेक्ट। And there is hardly any negativity in his nature. That is what I can see here. Okay, why do you say that? Because nothing has been expecting here. It is Jupiter Hmm. and Venus Rashi is there. Hmm. Okay. So neither Rahu is having an aspect, neither No. Ketu is having an aspect on the first house. Yeah. Right? So he is Okay. just a righteous person who can give Mhm. advice in a positive manner itself, Mhm. encouraging people. Okay. Okay. Rishaliji, you can Everything share will on be the in mic positive way. also. Huh? Rishaliji, you can share on the mic also. Yes, Sarojji? No, everything is positive in his nature. That is what I can say. Acha, everything Right we now. seems to be very positive. In built. Those Okay. Rahus and Ketus, those are just of different aspects right now. Right. Not here. Okay. In his Okay. basic nature. Okay. Okay. ठीक है. What makes this person happy? What is making this person happy? He basically is like trumpet kind of thing, like flower blasting, like things दूसरे होते हैं कि मतलब illusion create करना हो सकते हैं, could be उस चीज से काफी happiness उनको मिलता होगा, and कुछ भी ट्रांसपर्सनल थॉट्स जैसे आता होगा तो उस चीज से उनको काफी हैप्पीनेस मिलता होगा, एंड नए 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 चीजों को इन्वेंट करना या फिर नए most probably could be associated with more motherly peoples, and more than one motherly peoples he or she must be associated, and she or he must be getting pleasure from तब खुशी उनसे मिलता होगा उनको because of the Uranus transiting partially to the fourth house. Okay. It could So be, you can see him to be a silent screamer, like silent screamer. Okay, why do you say that? That is, he want to do the things which, and he want to keep on doing the things unless and until he don't get that confidence, and without saying anyone else, he will do it of himself. I think Okay. He will not allow his left hand to know what right hand is doing. And he Acha. keep on doing those things. very secretive kind of thing person as far as his happiness and relationship with other people is concerned. Very secretive. Okay. 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 Transforming things would bring happiness to him. Pluto in fourth house, and Uranus is also coming, so creating and transforming new things will bring Doing happiness something to out of him. the box, doing something Yes. rebellious. Rahu And Rahu is strengthen all these aspects. Rahu. Yeah, it will correct. it will Yes. magnify all those things. And Yes. gaining like achievements and medals will also bring him happiness. In the house of gains, moon is there, so that will also bring him happiness. Correct. Correct. Till Very he true. don't get the confidence, he will not reveal the things out. Correct. सर मूड के ऊपर अगर जाते हैं तो प्लूटो और राहु का मूड थोड़ा ओके ओके दिख रहा है, बट 9th हाउस में जुपिटर का मूड ठीक लग रहा है, थोड़ा अच्छा, मतलब उन दोनों से बेटर. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको रिलीजियस चीजें, फिर फिजिकल वर्क रिलेटेड जो भी चीजें होगी उसको करने में ज्यादा हैप्पीनेस मिलती होगी, सेटिस्फेक्शन मिलता होगा. और अगेन 9th हाउस को भी सेम वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूरेनस है वहां पे और यूरेनस इनको एक्सपेक्ट कर रहा है.
तो फिजिकल चीजें और धर्म से रिलेटेड या बोले ना अपना राइटियसनेस से रिलेटेड जो भी चीजें रहेगी ना, वो करने में, ये नई नई चीजें करने में उनको ज्यादा खुशी मिल रही होगी। Okay, okay. ऐसा लगता है। Overall, do you think Without this person could have been a leader or no? लीडरशिप क्वालिटीज है इनमें, दिखाई दे रही है? व्हाट डू यू थिंक? बहुत क्रिएटिव हैं, क्योंकि इनके 11th में सन और मून दोनों है। उसके कारण इनको बहुत रिकॉग्निशन भी मिला है, अचीवमेंट्स भी इनके जीवन में काफी आए हैं, ना नेम फेम है। लेकिन जो ये सब कुछ इन्होंने गेन किया है, तो क्योंकि मून और सन दोनों कंजक्शन में हैं, और तो सन के कारण इनका जो अचीवमेंट है वो काफी मतलब कह सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये लीडर भी हों, क्योंकि सन देता है लीडरशिप क्वालिटी और अचीवमेंट और नेम एंड फेम, तो दो जो इनका इनके फुलफिलमेंट 11th हाउस में है। ओके So I think the Sun and Moon are in partially in the 10th house, and the Pluto is also aspecting 10th house. Pluto and Sun and Moon are not friends; they are not good friends. They are not in friendship. तो सन एंड मून का क्वालिटी जो इनका में काफी स्ट्रगल हुआ होगा, स्ट्रगल कुड हैव बीन पॉइंटेड आउट। उनका मतलब लीडरशिप पोजीशन के लिए एस्पिरेशन रहा होगा, स्ट्रगल बहुत किया होगा, लेकिन प्लूटो कुड बी बिकॉज ऑफ द प्लूटोस इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रगल करके या तो चेंज किए होंगे या फिर, लेकिन वन थिंग इज सर्टेन कि लीडरशिप पोजीशन के लिए इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया। लीडर होंगे नहीं होंगे दैट इज, बट लीडरशिप पोजीशन के लिए इन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है। ओके ओके सर सेम थॉट प्रोसेस मेरा भी इसमें हो रहा है, क्योंकि सन 11th हाउस में है और नर्वस डिग्रीज में है, तो वो 10th में जा तो रहा है, बट मतलब लीडरशिप के लिए उतना भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो उनको रिकॉग्निशन शायद मिला होगा, बट लीडरशिप रोल नहीं मिला होगा शायद। ओके सर 11th में केतु है, सॉरी 10th हाउस में केतु है और मरकरी है, तो इस कॉम्बिनेशन से भी उनका जो प्रोफेशन है वो कम्युनिकेशन के लिए ही वो रिलेटेड है। तो हो सकता है कि मतलब कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो, तो लीडरशिप क्वालिटी हम उनको एट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ओके अपनी बोलने की एबिलिटी से लोगों को मतलब अपनी तरफ खींचते होंगे, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन है उसके अंदर मरकरी है और साथ में केतु है। करेक्ट तो हाँ, तो केतु भी इनको जो स्ट्रेंथ देता है कि ये निष्पक्ष होकर और बिना किसी मटेरियल गेन के बारे में सोचते हुए लीडरशिप क्वालिटी के कारण ये थोड़ा फेमस हो सकते हैं और लीडर हो सकते हैं, अच्छे अच्छे लीडर हो सकते हैं, जहां तक मैं समझती हूँ। तो सर इनका देखेंगे सर, केतु, सन, मून, प्लूटो, ये सब सटन की राशि में है। सटन का सन मून के साथ सारा फिर में रिलेशन जो है ना, एनिमीज में एनिमीज है। तो सटन मून का सारा एनवायरनमेंट एनिमी एनवायरनमेंट है। तो काफी मूड भी उनका काफी नेगेटिव रहा होगा सन एंड मून का। पंचदा देखोगे तो एनिमी नहीं आएंगे, नहीं, पंचदा तो न्यूट्रल प्लूटो आ एंड जाएगा। राहु का प्लूटो एंड राहु का एस्पेक्ट है 10th हाउस में, तो ये तो स्ट्रेंथ ही दे रहा है। हाँ, स्ट्रेंथन है ये उनका प्रोफेशन का हाउस। नहीं, मैं ये सन एंड मून का मूड की बात कर रहा था। उनका सारा एनवायरनमेंट, राशि 11th राशि है, सैटर्न, केतु है, प्लूटो का एस्पेक्ट है, वो सब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से है। पंचदा मित्री के सबसे तो मैं एजेंसी पंचदा मैत्री में न्यूट्रल आ जाएगा सन और सैटर्न का रिश्ता। राइट। मून और सैटर्न भी न्यूट्रल आ जाएगा। मर्क्यूरी सैटर्न भी ना न्यूट्रल ही आ जाएगा। केतु सैटर्न अति मित्र हो जाएंगे। ओके ओके व्हाट अबाउट this person's education knowledge level?
let us try to talk about knowledge level of this person or education level of this person, right? और कौन से टाइप का एजुकेशन ज्यादा किया होगा, लॉजिकल टाइप कि इमोशनल टाइप? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, इमोशनल टाइप के एजुकेशन कौन से होते हैं? साइकोलॉजी हो गया, आर्ट्स हो गया, राइट? दैट इज द इमोशनल टाइप ऑफ एजुकेशन. देन यू हैव लॉजिकल टाइप ऑफ एजुकेशन. लॉजिकल टाइप ऑफ एजुकेशन मतलब कौन सा? इंजीनियरिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया. अंडरस्टूड, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक, राइट? दो ही ऑप्शन है आपके पास टू चूज फ्रॉम, वेदर दिस पर्सन went too much into logical kind of education or emotional type of education. What do you think? आई थिंक ये बेसिकली जो है ना, इनका डिग्री जो है कुड बी पॉसिबली मैथमेटिक्स रिलेटेड से होगा, इनका इंजीनियरिंग या फिर मैथमेटिक्स रिलेटेड से होगा. एंड हायर डिग्री अगर इन्होंने परस्यू किया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने हायर डिग्री परस्यू किया होगा. कुड बी लॉ का एस्पेक्ट भी थोड़ा बहुत उनका इंटरेस्ट दिखाया होगा, लॉ की फील्ड में भी थोड़ा बहुत, या फिर Why are you saying mathematics and all? बिकॉज जेमिनी है, सॉरी मरकरी है फिफ्थ हाउस का, Hmm. तो उससे काफी उसमें रहता है. एंड बाकी कुछ एस्पेक्ट ऐसे फिफ्थ हाउस पे आ नहीं रहा है इनका, देखा नजर नहीं आ रहा फिफ्थ हाउस में इनका. Mm-hmm. पार्शियल फिगर भी कुछ आ नहीं रहा है. Okay. तो तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सर मैं यही कह रहा हूँ कि इनका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड, लॉजिकल थिंकिंग रिलेटेड थिंग्स Okay. Okay. कुछ भी इनका बेसिक फील्ड ऑफ एजुकेशन होगा. हायर एजुकेशन में कुछ भी सैटर्न है तो जुपिटर है, तो कुछ भी मोस्ट प्रोबेबली लॉ की तरफ इंटरेस्ट दिखाया होगा उन्होंने. Mm-hmm. सटन, और सटन वैसे भी 10 के नंबर में है, Mm-hmm. 10 नंबर में है, तो काफी कुछ भी हो सकता है. हायर सक्सेसफुली कंप्लीट भी करके लॉ की डिग्री में भी कुछ लॉ या फिर जस्टिस रिलेटेड फील्ड में Mm-hmm. कुड बी जस्टिस, लाइक ना जज होगा, जज के लिए एग्जाम में पास हुआ, समथिंग Okay. लाइक दैट, जस्टिस Okay. रिलेटेड थिंग, दैट Okay. इज Okay. रिलेटेड थिंग. Anybody else? Do you want to comment on her education? तो मुझे भी लॉ से रिलेटेड लग रहा है. मर्करी जुपिटर सैटर्न सब 9th हाउस में आ रहे हैं जो हायर डिग्री का है. Mm-hmm. मर्करी फॉर लॉजिक, जुपिटर आईटीएसनेस, सैटर्न इज आल्सो फॉर रिलेटेड टू लॉ एंड ऑल दोस थिंग्स. Mm-hmm. So higher studies might be related with something to law, like that. Okay. Okay. What about others? Anybody else wants to comment? Education. सर उनका फिफ्थ हाउस में तो जैसे ये हेमरश्मि जी बोल रहे लॉजिकल कुछ हो सकता है. Mm-hmm. एजुकेशन, फिर उनको मून भी कंबस्ट वहां पे हो रहा है 11th में, Mm-hmm. द सन वहां पे वो कर रहा है उसके ऊपर, तो शायद वो हो सकता है. बट हायर लेवल का जो एजुकेशन होगा ना वो ह्यूमैनिटी रिलेटेड चेंज हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों जुपिटर एंड सैटर्न दोनों भी उत्तरा भाद्रपदा में, तो Okay. कुछ ना कुछ हाँ ह्यूमैनिटी रिलेटेड उनका जो हायर एजुकेशन है वो रहा होगा. मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी भी हो सकते हैं या कुछ, मतलब ऐसा, मतलब उनका फील्ड Okay. चेंज हुआ होगा प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, ऐसा लग रहा है. Okay. 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 आई थिंक Interesting. सर साइकोलॉजिकली रिलेटेड थिंग्स चांसेस थोड़ा, मून कंबस्ट है तो उस फील्ड में थोड़ा लेस प्रोमिनेंस है साइकोलॉजिकल थिंग्स में, मून Okay. रिलेटेड थिंग्स. Okay. Let's see. Let's see. What about others? Anybody else wants to comment anything about this person's education? Okay. Okay. Vrishali ji is saying education in foreign land. Do you think that happened? Sir, sir, Yes. for me it is Jupiter spirituality with connected with law something, for which this person went to on international level for education. Mm-hmm. Mm, yeah, something connected with positivity of for the mm,
something connected with righteous only, sir. Okay, okay, okay. Something with human rights or Yes, like that. logic. Yeah, maybe. Mm-hmm. Okay. Human right activist. Ketu and Mercury. Mm-hmm. In 11th राशि, शनि की राशि में. Mm-hmm. Working for the masses. गरीब लोगों के लिए आवाज उठाइए. Okay. 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 ठीक है. तो इनके एडुकेशन के बारे में अगर, चलो बाद में ही बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर क्या 2-3 क्लूज निकल जाएंगे. ऑलराइट, लेट अस कम टू द प्रोफेशन. ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द प्रोफेशन? सरस मीटिंग में मैं नाम एट द एंड ओनली बताता हूँ. आई विल टेल यू द नेम ऑफ दिस पर्सन एट द एंड, राइट? टिल देन वी विल try to read the chart, because the moment I tell you the name, we all become biased, right? So without doing that, profession, let us talk about profession. What do you think is the profession of this person? वकील हैं, जज होंगे, Judge, नेता वकील. होंगे, Maybe a नेता हैं. doctor also. हाँ पुष्पा जी, डॉक्टर भी हो सकते हैं सर. डॉक्टर भी हो सकते हैं. ओके, वाई डॉक्टर? नेचुरल स्ट्रेंथ 6th हाउस में है नेपच्यून, हम्म. तो वो क्लिनिक डॉक्टर्स को भी रिलेट करता है. दैट्स व्हाई. हम्म. And in the second, Mars is there, so that is also seen for in income house. So Mars हम्म. 6th, and in the 10th there are so many planets like Rahu. All those aspects are coming. हम्म. राहु, प्लूटो, यूरेनस सबका एस्पेक्ट है प्रोफेशन के घर में. हम्म. तो ये यूरेनस नई एनर्जी दे रहा है, तो उनका काम ऐसा है कि जहां पर उनको बहुत सारी न्यू डिस्कवरीज करने का मौका मिलता है. हम्म. बहुत कुछ नया वो अपनी थिंकिंग से लेके आते हैं, बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं. प्लूटो इज हम्म. फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. हम्म. राहु इज गिविंग एनर्जी टू इट. सो प्रोफेशन जो उनका जो भी है, मुझे लगता है कम्युनिकेशन फील्ड में है. नेता हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, वकील हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, बट हम्म. वेरी डायनेमिक पर्सनालिटी. हम्म. one who brings transformation, one who brings a change हम्म. in the society, in the functioning of whatever the existing system is. Okay. हाँ. I think, sir, she must be in the field of flamboyancy, like artistic field और सब कुछ में होना था. First of all, she is in Venus ascendant, and natural strength Neptune जो भी है वो भी Venus में ही है. हम्म. तो काफी एक्सपोजर वीनस एंड नेपच्यून का काफी डोमिनेंस रहता है इनका दोनों फील्ड में. नेचुरल स्टेप फील्ड में उसमें काफी, वो जो भी फील्ड में होगा उनमें ग्लैमरस तो जरूर होगा उनके फील्ड में. मस्ट बी एन वेरी ग्लैमरस पर्सन. ओके. मोस्ट प्रोबब्ली कुड भी हो सकता है. ओके. ओके. एंड जैसे मार्स की बात हम देखें तो सेकेंड हाउस में भी है, हम्म. तो एग्रेसिवली कुछ फील्ड में भी उन्होंने हो रहा होगा. Whatever field she might have chosen, but she must have brought the transformation into that field of profession. Okay, but what profession? That is what I'm trying to ask. Glamorous, most probably like artistic professions में होने का chances बहुत दिख रहा है सर मुझे. ओके. ओके, लेकिन आर्टिस्टिक होने के लिए तो मून का पावर तो नहीं मिल रहा है शायद. मून का नहीं मिल रहे, बट मुझे मेर्कुरी और वीनस का पॉइंट ऑफ वीनस है, वो टेंशन वाले हाउस में बैठा हुआ है. ओके,
बट टेंशन हैंडलिंग इनका नेचुरल स्ट्रेंथ हम बोल Correct. सकते हैं. हैंडलिंग टेंशन, हैंडलिंग कंपटीशन, दिस इज देयर नेचुरल स्ट्रेंथ. Natural. Yes. Because Neptune is coming in the 6th house. So कंपटीशन को हैंडल करना, टेंशंस को हैंडल करना, दुश्मनों को हैंडल करना, right? That is very natural strength for this person. Okay. सर यही एक्चुअली आ रहा है क्योंकि केतु मर्क्यूरी दोनों का भी मूड ठीक है और सैटर्न का भी थर्ड एस्पेक्ट आ रहा है, तो लोयर या वैसा ही लग रहा है कुछ इनका प्रोफेशन. ओके ओके, ठीक है. फाइनल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, एंड देन आई विल स्लोली स्टडीली गिव यू क्लूज, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड हु दिस पर्सन इज. नेचर ऑफ डेथ, व्हाट डू यू थिंक? क्या हुआ होगा? सेपरेटिव डेथ हो गई, एक्सीडेंटल मे बी, क्योंकि मार्स है और वहां पे राहु का भी एस्पेक्ट आ रहा है. ओके ओके, 8th हाउस में. ओके. हाँ. What about anybody else? Any other comments there? What do you But think is the nature of that? death might be peaceful because Jupiter is also coming there, and ninth Rashi is also there. Okay, Jupiter is also coming, 9th Rashi is also coming. And So could be Saturn is also coming there. तो प्रोफेशन में मैं बोलना चाहता हूँ सर, इनका जुपिटर का डीप साइंस रिलेटेड भी हो सकते हैं सर, क्योंकि जुपिटर भी एस्पेक्ट जा रहे हैं सेकंड हाउस पे पार्शियल, तो कुछ भी डीप साइंस में भी हो सकता है. अभी देखा मैंने इनका डिग्रीज. एंड जुपिटर सैटर्न दोनों ही 8th हाउस में है, तो इनका प्रोलॉन्ग जो मतलब मोस्ट लाइकली he could have suffered a little bit before that because of the Saturn's partial Saturn suffered काफी सफरिंग डेथ से पहले रहा होगा. एंड डेथ का फील्ड में दिखा रहा है, सैटर्न भी है, तो लॉन्ग लाइफ तो दिखा रहा है इसमें. जुपिटर भी डेथ के हाउस में है, तो पीसफुल डेथ हुआ होगा, बट it could be suffer, maybe possibility कि सफरिंग कुछ हुआ रहा होगा डेथ से पहले. Okay. Sir, I can see something like cancer related to blood. Why? Or Mars का liver, aspect आ रहा है. or liver disease, in which it's long taking, means slow death. Mars aspect भी जा रहा है liver सर इसमें. related diseases or blood related disease, something common like cancer. But it was not a sudden death. That's all. Okay, I'll start giving you some clues. What do you think when this person died? Was she or was he alone, or there were some other people also? Alone होने का chances बहुत है. Any indications of that? Yes sir, alone होने का chances बहुत है, and could be most probably मार्स का aggressive forces की वजह से ही डेथ हुआ होगा उनका, and सैटर्न उनको alone किया होगा. Okay. So not be alone. Okay, why? Saturn is friends also, or someone might be there. Vrushali ji, the most of the things you are saying, they are not matching. Huh? Okay, Vrushali ji. I'll just give you a feedback there, okay? So for me, it should be a liver disease, which is also related to blood, and which this disease was lately diagnosed. That is what I guess. Okay, okay. Let us come to the clues. Okay, let us come to the clues of this person. First of all, it was a group death. Okay, something that happened to a group, and they all died together. Okay, and it was an accident. Okay, how can we say that now once we know the clues? Can we relate it to the chart? The Mars and Rahu aspect is coming on the 8th house.
Right, And correct. Saturn might be group of friends Right, group or of friends, group of colleagues. And in yes, fact, this person had six of their colleagues with them. Okay, at the same place. Going through the same experience of Okay. death. Okay. So this is one clue I wanted to give you. Okay. Second clue I wanted to give you was engineer, aerospace engineering in India. Okay. Became an engineer in India. Okay. How can you see engineering as the education? Can you see? जुपिटर का एस्पेक्ट मार्स पे है शायद, इसलिए, बट कोई चीज Saturn. ठीक नहीं दिख रहा। Okay. And why जुपिटर aerospace engineering? Aerospace, right? It बिकॉज has these थर्ड elements. Space element is there. Rahu's aspect is coming on the 10th house. Rahu is there, and Mercury maybe Mhm. logical something, Okay. and 11th. Okay. Anybody else? Jupiter is space. Doctorate also in aeronautical things only. Okay. So, yeah, doctorate also, masters also in aerospace, basic graduation also in aerospace, right? And then doctorate also in aerospace, where this person worked on some high speed things about some, right, that kind of a research she did. High. सर मार्स थर्ड राशि में है, सेकंड हाउस में, और उसका जो लॉर्ड है मर्क्यूरी वो 10th हाउस में है, तो इस वजह से शायद एरोस्पेस हो सकता है, क्योंकि थर्ड साइन जो है वो एयर साइन है, एरी और साइन है, मर्क्यूरी जो है वो ड्यूअल है उसका राइट। नेचर। और एक कनेक्शन है मार्स का एस्पेक्ट ऑल्सो यू आर एबल टू सी इन द फोर्थ हाउस, सॉरी फिफ्थ हाउस, राइट। मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट is coming in the fifth house. Now fifth house is हम राशियों के बारे में क्या बोलते हैं सालसा मेथड में? They are your desires, they are your expectations, that is what you want to do, right? तो बेसिक एजुकेशन इज सिक्स्थ राशि। अभी सिक्स्थ राशि का लॉर्ड कौन है? Mercury. मर्क्यूरी। मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, राइट। सो बेसिक एजुकेशन, व्हाट साइंस में कुछ करना है, दैट इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू डू। साइंस में कुछ करना है, राइट, एयर रिलेटेड, बिकॉज मर्क्यूरी इज अगेन एन एयरी प्लैनेट, राइट। उसके रिलेटेड कुछ करना है, राइट, इंटेलिजेंट कुछ करना है, लॉजिकल कुछ करना है, दैट इज व्हाट दिस पर्सन इज थिंकिंग एंड दैट इज व्हाट दिस पर्सन डिजायर्स, right? Using dispositor theory of Vedic, yes, we have the sixth Rashi Lord also sitting in the 10th house, right? Yes. है कि नहीं, right? Which is a good sign, which is an energy giving sign, which is a confirming sign. Okay, हाँ ये हो सकता है, कर सकता है, right? And at the same time, Mars is aspecting also in the basic education, the graduation level education, right? फिर डॉक्टरेट लेवल तक जब जा रहे हो तब हम कौन से हाउस को देखेंगे? 9th house. We'll look at the 9th house, right? Doctorate level and all of that, right? So doctorate level space element खुद बैठ गया वहां पे, right? Jupiter is there along with Mercury, Saturn, है ना? Jupiter, Yes, पुष्पा जी। the Mercury, Jupiter, and Saturn are all air elements. All air elements.
Here Saturn, I would say earth element, but ठीक है, for this purpose, Mercury is there, Jupiter is there, right? All air elements have come there. है कि नहीं? Okay. So this, from this we can confirm. हाँ ठीक है, चार्ट में भी the indications are there कि aerospace and aeronautical engineering and all of those things this person has done. Okay. Flying can give this person lot of happiness, right? New creation can give this person a lot of happiness, right? And this person is Kalpana Chawla. Okay. This is the chart of Kalpana Chawla. ठीक है? Very nice chart actually this is. सर मेरा एक क्वेरी है, जुपिटर को एयर एलिमेंट कैसे कहते हैं हम? एक्चुअली स्पेस एलिमेंट है वो. स्पेस. हाँ, लेकिन फिर अभी जब हम पृथ्वी पर देखेंगे तो स्पेस से सबसे नजदीक कोई एलिमेंट है तो वो अर्थ है, एयर है. राइट. इसलिए ओके. इस केस में तो डायरेक्ट स्पेस एलिमेंट है. मतलब कल्पना चावला जी के चार्ट में जुपिटर डायरेक्टली रिप्रेजेंट स्पेस ओनली. For her higher education, she might have done it in international level only. So it's not completely Indian, according to me. Yeah, international. Further education happened internationally. Okay. Sir, in the 8th house also Jupiter Rashi is there. Jupiter is coming all space elements. Okay. Right. There also space element you can see. So what happened during the death was the shuttle that was coming back, right? There were some leaks and in the Earth's atmosphere, वो जल गए, right? The entire spaceship, वो जल गया. That is what happened. She was unmarried, sir? Hmm? She was unmarried. Yes. Okay. She was unmarried, no? I will check. I am checking. You all can also check. So Saturn Yeah, would I be think she was. representing the metal element of the spacecraft in the 8th house. Possible. Okay. Sorry sir, I missed थोड़ा सा मेरा सिस्टम कंप्यूटर खराब हो गया था. Who was she sir? Kalpana Chawla. अच्छा, कल्पना चावला, space Right. Indian born American NASA scientist. Correct. So education wise तो logically है सर उनका, mathematics logical related है. Correct. But profession तो उनका सर हम लोग जो कैसे कह रहे थे जो भी related नहीं दिखा रहे, Venus related तो नहीं दिखा रहे, but glamorous तो है, बहुत name and fame तो मिला है Glamour, उनका. okay, Venus in the 12th house. Glamour happened after death. Yeah. तो उनके प्रोफेशन में तो ग्लैमर मतलब आया जब है. वो कर रहे थे सारा चीज, मतलब कुछ चंद लोगों को ही मालूम था कि हाँ ठीक है, मतलब there is some Indian astronaut also who is, who has gone to the space and come back and all of those things. But real glamour, real recognition, real respect happened after death only. Venus in the 12th house. तो सैटर्न का एस्पेक्ट जो डेथ थोड़ा बहुत पेनफुल है, वो तो वो आज दिख रहा है सर, सैटर्न का है जुपिटर 8th हाउस में रिलेटेड. Right. How could we see the recognition after death from the chart? One indication is, I told you, Venus is in the 12th house. है ना? Right. Recognition is, Sun is also there in the 11th house. So recognition for sure. Recognition is promised for sure. Because Sun is there in the 11th house.
And 11th house itself is the house of recognitions and lot of respect and lot of accolades and lot of sudden gains and all of those things. Right? And Venus is in the 12th house, the face person beautiful to say what's yours beautiful in the face wise. Sir, can we get the details of this person? You want birth details? Yes, sir. Achha, sure. Let me check. Huh? And personality, it's a point of view, Venus or Neptune related. March 17, 1961. Time is morning 10 a.m. And place is Karnal. Haryana, sir. Sir, place? Karnal. Karnal. Nal, correct. Karnal. 17th March 1961. Correct. 10 a.m. Karnal. Correct. The personality wise, sir, Venus का glamorous तो personality with substance. So how do we relate She Neptune never in- showed her glamour, no? She never showed her, her flamboyancy, bolo. Yeah, she never showed all of those things. She was very focused on her work. यही करना है, यही है, यही मेरी दुनिया, यही मेरी सब कुछ. नेचुरल स्ट्रेंथ नेपच्यून भी पूरा और बचपन से ही स्पेस रहा होगा दिमाग. एयर फैक्टर मेनली बिकॉज़ ऑफ द एयर. राइट, बचपन से. पुष्पा जी क्या बोल रहे थे आप? So how do we relate Neptune to 6th house here? Very easy to overcome competition, very easy to overcome. So Neptune helped in studies also. Neptune must have helped in profession also, to overcome anybody who is blocking her path. Right. See, it is not easy to reach that level to become an astronaut and go to the space and come back. Right. There's so much competition there also. Right. सर यहाँ पे मेरा नेपच्यून रिलेटेड क्वेश्चन है. सर नेपच्यून है फोर्थ लॉ और सबका और इंसल्ट का फील्ड में. तो नेपच्यून एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जैसे कि ओवरकम का तो ठीक है, कंपटीशन इंसल्ट को ओवरकम करना वो सब तो ठीक है. अदर साइड ऑफ द थिंग ऐसा है कि इंसल्ट उनको भर भर के बहुत सारा टू द माइट हैव गॉन टू द पीक आल्सो. ये भी कैसे कैसे इंसल्ट लो फोर्थ लॉ से वो सब कुछ जो नेगेटिव थिंग्स जो हम बोलते हैं. वो सब फिर वो भी बहुत पीक पे भी गया होगा, लेकिन कैसे जुपिटर और मर्क्यूरी कंजंक्शन है क्या? Can anybody check? No. No, नहीं. नहीं सर, नहीं. Jupiter 7 degree, Mercury 5 degree. No sir, no sir. Okay. 7 and 5. So they are not in conjunction. Okay. ठीक है. Sure, Vrishali ji, go ahead. Anybody confirm whether she married or not? Chances थोड़ा कम ही लग रहा है सर. I don't know, but it's where the chart it seems it's less chances. Mars she had married, so I don't know, but that time I had heard that she had married a foreigner. Srikant ji, this is Kalpana Chawla. She was married. I think she married with Jean Pierre. Okay. Pierre Harrison. Okay.
So do you see a promise of marriage in the chart? I don't find so. Be a living relationship or something. Do you see promise of marriage in the chart? सर 5th हाउस में वीनस एंड जुपिटर दोनों का एस्पेक्ट एक साथ में, तो 5th हाउस से मिल रहा है. Okay. Yeah. Venus is partially in 11th, no? Yeah. मे बी लव मैरिज हो सकती है. सेवेंथ हाउस में किस किस का एस्पेक्ट आ रहा है? कुछ आ रहा है सेवेंथ में? नहीं. नेपच्यून का डिग्री कितना है? No. So no aspect, only Mars Rashi is there in 7th Only house. Mars Rashi, no aspect at all, huh? In the seventh house. No, sir. Right, So but that's what Jupiter. I was thinking. Is she married, not married? Or maybe she got married, but might have the promise might have not been there. But Because she of got that, married and it did not survive. The I marriage think. did not survive. अच्छा. Maybe Indra- marriage was not the मैरिज तो focus दिखा of her रहा है. life, so no हाँ, planets क्योंकि were उनकी there. डेथ तक तो दिखा रहा है. उसके बाद में लिखा है कि मूवी का भी बनाने को बोला था उनका हस्बैंड से, बट उन्होंने बोला, मतलब कल्पना जी को, बट उन्होंने बोला कि हमको अपना लाइफ प्राइवेट रखना है करके ऐसा लिखा हुआ है विकिपीडिया में. Okay. Okay. They married on 1983 at the age of 21. Okay. I think very early marriage, since the seventh house Rashi Lord is sitting in the second house. एट द एज ऑफ 21. है ना? और ये second house Rashi Lord is also Mars only. Seventh house Rashi Lord is Mars. Right? That is sitting in the second house. Correct. And second house stands for family. सर आज सभी लोग वीडियो ऑफ क्यों कर रखे हैं सर? 3 आदमी ही. आज उन लोगों को मैं पसंद नहीं आ रहा हूँ शायद. मेरा चेहरा आज ठीक नहीं लग रहा है. आप तो दिख रहे सर, वो लोग बस 3 ही वीडियो ऑन है सर. Right. Then Can we say that since the ascendant lord in the 12th house, she died very far off from her house or birthplace? what can you? That the ascendant lord is in the 12th house, so can we say that the reason for dying so far off from a place? Ascendant Lord in 12th house. Generally, the indication is you will be born somewhere, and by the time you die, you will be somewhere else. Right? And this is also an indication of moksha also. Right. Yes. Right? सर और मुझे ये पूछना, सर इनका स्पेस में डेथ हुआ है, वो कैसे कंफर्म करेंगे? स्पेस फैक्टर. स्पेस में डेथ हुआ तो यही है ना, स्पेस एलिमेंट ही आ रहा है ना 8th हाउस में. हाँ. Jupiter is there. Right. Rashi is Right. also of Jupiter only. Yeah. Right? Rahu is also there. Air is Rahu also to there. mention. Foreign lands, all of those things, right? Yeah. हायर डिग्री तो दिखा रहा है सर, जुपिटर रिलेटेड फील्ड्स में भी दिखा रहा है. All right. Okay, everyone. Anything else anybody wants to add or say? Then we can. सर इनका अर्था Close. फील्ड में, सर इनका अर्था फील्ड में अगर देखेंगे तो मार्स से मार्स
मार्स, नेपच्यून एंड प्लूटो अर्थ फील्ड में तो काफी ट्रांजिशन हुआ अगर इनको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डिस्कशन करेंगे तो नो डाउट ब्रेड एंड बटर तो इनका जुपिटर रिलेटेड दिखा रहा है। तो डीप स्टडीज के डीप साइंस में भी इनका मतलब वेरी हाई अर्थवाइज एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ। आई थिंक सेकंड हाउस में मार्स है, सेकंड हाउस सिक्स्थ हाउस में नेपच्यून है, नेपच्यून। 10th हाउस में तो सारे तो हैं। मेरा यूरेनस ये इज आल्सो देयर, प्लूटो इज आल्सो देयर, राहु इज आल्सो देयर, मर्क्यूरी इज आल्सो देयर, तो मुझे राइट। यही देखना है सर इनका जो हाई फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मीडिया में जितना भी आया है अर्थ हाउस तो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है इनका। लेकिन जिस तरह से स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है जैसे कि अंबानी जैसा अर्था का पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, लेकिन मीडिया में इतना एक्सपोजर नहीं मिला कि अर्था इतना हुआ होगा इनका उनको दिखा रहा है। सीक्रेट रखा होगा। राहु भी तो है ना, हम्म, राहु भी तो है, हम्म, सीक्रेट रखा होगा। हम्म। लेकिन वो लेवल पे जाने के बाद अर्था तो अच्छा रहेगा ही रहेगा। अच्छा तो रहेगा, लेकिन वही मीडिया में तो कुछ भी इनका जो अर्थ का पोजीशन दिखा रहा है बहुत हाईली बहुत अर्थ दिखा रहा है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ दिखा रहा है, बट मीडिया हो में कुछ सकता है नहीं। ना, फिर हो सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज सन इज ऑल्सो कमिंग या इन द 10th हाउस। या सन इज ऑल्सो कमिंग इन द 10th हाउस। ऊपर से असेंडेंट भी वीनस है, हम्म, राइट। सो समवन हु लव्स लग्जरी, समवन हु लव्स मनी, है कि नहीं? यस। मून इनका कंबस्ट है सर, तो उसे मौसम बिल्कुल भी हाँ, नहीं रहा मौसम। समवन हु लव्स कैलकुलेशन, समवन हु मस्ट बी गुड इन फाइनेंसेस ऑल्सो। मतलब यस। कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे रखना है पैसों को। समवन हु न्यू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट। नॉलेज भी रहेगा, सीखा भी रहेगा उसके बारे में, है ना। और मार्स इज देयर इन द सेकंड हाउस। शायद ब्रेड बटर पे कभी ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं होगा। यस। सबसे ज्यादा मजा उन्होंने कंपटीशन से कमाया हुआ पैसा, राइट, जो 6th हाउस से आया रहेगा ना, वहां पे बहुत मजा भी आया रहेगा उनको कि हाँ दिस इज रियल इनकम। बाकी तो ऑटोमेटिकली मिला रहेगा। सन इज देयर इन द 10th हाउस, यू हैव यूरेनस देयर इन द 10th हाउस। उनका रिसर्च के वजह से पैसा आया होगा। यूरेनस स्टैंड्स फॉर रिसर्च, या right? Then we have moon also in the 10th house. Then we have mercury also there in the 10th house, right? So overall 10th house automatically lot of money, automatically lot of money that is there. कंपटीशन तो रहा होगा तभी उनका सिलेक्शन बहुत लोगों के बीच में हुआ होगा स्पेस बीच में में जाने हुआ, के and she knew how to overcome the competition. लिए। She knew उनका कि how to win this. वो तो उनका नेचुरल स्ट्रेंथ है। कोई भी हाँ, कंपटीशन आएगा तो वो तो विन करेंगे। correct. और नेपच्यून इज इन द 6th हाउस एस्पेक्टिंग द 12th हाउस। सो रियल उनका जो नेचर है वो बाहर जाने के बाद खिल एक्सपोज गया होगा, राइट। व्हेन दे वेंट अवे देन ओनली द रियल नेचर स्टार्टेड कमिंग आउट, राइट। रियल पोटेंशियल स्टार्टेड कमिंग आउट, राइट। केतु यहाँ पे अकेले पड़ रहे हैं। There are a lot of other planets are also coming there. Okay, so Ketu is like, okay, I have no other choice. I'll support only on a spiritual scale also. And that is why what one indication Ketu can give here is the profession was, there were spiritual indications also that this is the profession which will lead to moksha also. That is one indication Ketu is giving. Yeah, But in case नेपच्यून of death, नेपच्यून इज आल्सो एक्सपेक्टिंग 12th हाउस तो मोक्ष का correct, उसमें तो दिख रहा है, तो मोस्ट लाइकली 99% चांसेस वुड बी मोक्ष तो right, होना है। correct. but in case of death, rather than using blood related, I might have used it fast death, fast unexpected death, isn't it? Yes, Fast Mars is promising unexpected that. Yeah, death yeah. in a group. In a group, Mars is also number of people. Mars is not number of people.
But Mars is warlike Among. situation. Mars is like sudden situation that you have to fight right now, live or die, right? And group wala jo part hai na, Jupiter, Saturn. Saturn, right? Saturn is Saturn a is group of colleagues. colleagues. Yes, Group Saturn of is colleagues, colleagues, friends. right? And Jupiter is a wisdom wala. Correct. Whatever happen will see. Correct. Correct. Very true. That's good. Sun and Ketu also, they are very close by. They are not in conjunction. They are very close by. See, for moksha, no, what is moksha? End of consciousness for that person, right? End of that person's consciousness. And where do we see consciousness from? We see it from sun, right? Because sun is the center of the solar system. Sun is the core of everything, right? So you need to, if you want 100% surety कि ये this is the last birth time or this is the last lifetime, this is the moksha life, right? The death is going to lead to moksha. If you want 100% surety of that, right, or 95% surety of that, you need to look at the sun also, right? You need to look whether Pluto is making any connection with sun or not, or Ketu is making any connection with sun or not, right? Because we need to have indications of completion of that part also, the soul part, the consciousness part, right? So here we have Ketu very close to the sun. And if you create the salsa chart, I think Pluto and sun will also come into contact, right? So this is also a very important indication for moksha. Okay, you can check your charts also, right? If you are very interested in moksha and all, right? So you need to check whether your sun is in any kind of connection with completing energies. Okay, completion energies कौन सी है? Ketu is completion energy. Pluto is completion energy. Okay, Uranus is starting energy, right? You have to start some. But what is Pluto is saying? Khatam karo, right? This is completion energy. Okay, so you need that confirmation. Okay, this time the soul's journey is ending, soul's journey is completing, right? Pluto And then you need to have some indications in the 12th house also to make sure that you can look for moksha in this particular lifetime. The sun coming in the 12th house will also indicate that. Yes, sun directly coming in the 12th house or even 8th house, right? Sir, in my case, my Ketu is in first house. Sun and moon both are in second house. Ketu first house 12 degrees, sun is also in 12 degrees. थोड़ा बहुत combinations तो है. Okay, okay. Congratulations. Now you'll be happy entire day now. Okay. Okay, everyone. I think this has been a good discussion for today. And first of all, let us, pay our respects and our pranams to life of Kalpana Chawla ji. So, thank you to her for inspiring so many kids in our country to take up space, take up aerospace, aeronaut, engineering, and all of these things. Inspiration to a lot of women, inspiration to a lot of children, right? For the work that she has done, right? And it was tragic in the way the death happened, but you never know. In our case also, when life calls us, when death calls us, right? There are indications in our chart, right? And it is better to be aware also about those indications, right? And better to accept it also. Yeah, okay.
right? In case, for example, if Uranus is there, right? And the indication is complete sudden, right? Complete creative, right? Very out of the world, very rebellious kind of a way to die, right? That is what Uranus can tell you, right? If Neptune is there, then it will be like very smooth going, very peaceful, right? That kind of a way. Then if Pluto is there, right, then you should think about these indications, okay? Jupiter. About your death also. Okay. So think about it. जुपिटर में कैसे रहता है? वही बोल रहा हूँ ना, think about it. Okay. सर एक कॉमेडी वाला बात बोलूं? हाँ बोलो. मेरा ना 8th हाउस में जुपिटर, केतु, यूरेनस तीनों भी हैं और शायद तीनों भी कंजंक्शन में, साथ में नेपच्यून भी है, फिर मार्स का 4th एस्पेक्ट है। तो मेरे को Okay. 2 चीजें दिख रही हैं कि एक तो मैं या तो हंसते-हंसते मरूंगी क्योंकि 4th एस्पेक्ट हैप्पीनेस वाला होता है, एक्सीडेंटल एकदम से डेथ होगी, और दूसरा मेरे को ये लग रहा है यूरेनस है ना तो लाइफ ने ना बार-बार मारा, बार-बार जिंदा किया, ऐसा भी फीलिंग आ रहा है मेरे को। Okay. बट जुपिटर ने संभाल लिया। Okay. Okay. All right. Okay. On that note, let us close for the day. I hope you enjoyed today's session. Okay, I'll upload it as soon as possible. And for another SARAS meeting, we'll meet again next Sunday. Okay, and it is very important to keep attending SARAS meetings because you get so many different perspectives. आज भी शायद कुछ अलग-अलग perspective आपको मिले रहेंगे. Can anyone share what is your biggest learning today, or what is a different learning, or what is something new that you experienced today? Who would love to share? Please share. सर सैटर्न अगर 8th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं तो लेट मैरिज तो होना चाहिए था. Late सॉरी, death. लेट डेथ होना चाहिए था. हमने कितने सारे चार्ट्स हमने देखे हैं, right? It is not true. Okay, you have to look at other factors also. Okay. तो मैंने ये चीज, हाँ पारुल जी. ये चीज एक सीखा कि असेंडेंट अगर अपने घर से दूर बैठा है तो बर्थ एंड डेथ दोनों अलग अलग जगह पे हो सकता है. ये एक मेरे लिए न्यू लर्निंग था. अच्छा. Okay. माय लर्निंग इज सर केतु एंड सन का जो है मोक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू से, नेपच्यून का Right. मोक्ष का पॉइंट, नेपच्यून का जो एस्पेक्ट जा रहा है 12th हाउस में मोक्ष का पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पॉइंट है। और खास करके मुझे देखना सर, जैसे कि नेपच्यून के नेचुरल स्ट्रेंथ भी 6th और 12th का दोनों, मतलब नॉट नेगेटिव बट चैलेंजिंग हाउस में एस्पेक्ट जा रहा है। तो वो खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपका का पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट केस में, उनका खुद के केस में कैसे, मतलब पॉजिटिव, उसको भी कैसे पॉजिटिव व्यू से देखना चाहिए, वो दैट है। एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज देता हूँ सबको। कल्पना चावला जी के साथ में जो जो लोग थे, अगर आपको उनका भी चार्ट मिलता है, राइट, इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, उनकी अलग अलग जिंदगियां थी, राइट, दे हैड डिफरेंट लाइफ्स, but towards the end of their lives they all came together and they were all in the same place, going through the same experience of death, right? So if you're very curious about astrology, right, try to find out their charts also and try to find out the nature of death, the cause of death, right? And I am sure that there will be so many common pointers that you will see that are coming together. All right. This will be a nice exercise to do. Okay. In this particular entire session. Okay. Yes, Take care. Bye bye. Enjoy your Sunday today. Thank Okay. you, sir. Thank Thank you so you, much, And sir. Good day, remember, sir. advanced students, level 5, we are starting BNN from Monday or Tuesday. Just check the calendar. Okay. Brigunandi Nadi, we are starting. Right. And this time I have decided I'll make it a certification course. Okay. So Brigunandi Nadi, you just come, you learn. And at the end, there will be a test. And once you pass that test, you'll get a separate certificate for Brigunandi Nadi. Okay. From our School of Prosperity. So those who have sir, done is it their the part golden of certificate. is it Yeah. the part of our course, sir? Yeah. If you have gone for all the levels, no, you have registered for all the levels, no?
So it is part of your level 5. Okay, sir. Okay. I'm not charging anything extra for the certification and all. Okay. Okay, sir. All right. Okay. Can I So, also tell, sir? yeah, sure. So those who have completed the golden certificates and all, they should definitely join. Okay. Yes, sir. All right. Okay, everyone. Take care. Bye. Thank See you, sir. you. Thank you, Okay. sir. Bye. All the best. Good day, sir. Good day. Thank you, sir. Thank you.